देखो बेटा, so first of all write the meaning. देखो, hidden goodwill refers to hidden goodwill refers to that goodwill which is based on new partners new partners capital contribution and his share of profit. Hidden goodwill refers to that goodwill which is based on his share of profit and his capital contribution. ठीक है? एग्जाम्पल लिखो. A and B are partners. A and B are partners with capitals rupees 60,000 and rupees 1,20,000. They decided to admit C into the firm, for 1/4 share in profits, 1/4 share in profits, full stop. C is to bring rupees 70,000 as his capital. Rupees 70,000 as his capital. Got it? Yes or no? Calculate the amount of goodwill and pass necessary journal entry. Pass necessary journal entry. Okay. So देखो, पूरे क्वेश्चन में अंदर गिवन किया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स गिवन है, न्यू पार्टनर दी कैपिटल गिवन है, न्यू पार्टनर दा शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, कितने भी गुडविल का नाम आया, एंट्री क्या दी पूछी, गुडविल दी, अमाउंट कितना पूछा, गुडविल का. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी फॉर हिडन गुड. पूरे क्वेश्चन च गुडविल का नाम नहीं है, कहते गुडविल का. बच्चे भी सोचते पता नहीं की कर रहे हैं कुछ. दिस इज अ
क्वेश्चन विच आस्क्स फॉर योर हिडन गुड मेरा मतलब कितना सॉल्विंग कर समझिए ध्यान मीनिंग की पड़े hidden goodwill refers to that goodwill which is based on कितने बेस पे फाइंड करोगे न्यू पार्टनर दी capital contribution and his share of profit. We will use these two things to find the goodwill. So कितना solving समझन तो पहला tell me one thing वंशिका अगर I ask you कोई चीज द टोटल अमाउंट 10 लाख है ओके आउट ऑफ दैट योर शेयर इज 1/4 तो कितना होगा 2,50,000 yes or no 1/4 yes or no but अगर हम सेकंड केस विच if I give you your share is 1/4 and your amount is 2,50,000 can you find the total उल्टा भी तो कर सकते कितना फाइंड करते जो बेसिकली छोटी क्लासेस के कंसेप्ट सोच लिए कि टोटल एक्स मान लो एक्स द 1/4 करके कितना आया सी ਤੁਹਾਡਾ 2,50,000 तो कैन यू फाइंड रिवर्स एक्स 2,50,000 इंटू 4/1 हो जाऊंगा तो एक्स कितना मिल जाऊंगा 10 लाख रुपए इज इट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट या छोटी क्लासेस तो करते आ रहे हैं कि अगर किसी टोटल अमाउंट का 1/4 250 है तो 250 का 4/1 करके टोटल भी तो फाइंड किया जा सकता 10 लाख रुपए जैसा नो वैसा नो ठीक है यही कंसेप्ट इतने लगाना की कह रहे हैं क्वेश्चन कितना फाइंड करिए सुनो हु इज द न्यू पार्टनर सी सो सीज कैपिटल कितनी गिवन है ₹70,000 सी द शेयर कितना है 1/4 सी द शेयर इज 1/4 you do one thing for heading की लिखनी कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल so C's capital is share is 1/4 and amount is 70,000 अगर 1/4 वाले दी कैपिटल 70,000 है तो पूरे फर्म की कितनी होगी हाउ विल यू फाइंड 4/1 करके so next line we'll write total capital therefore total capital of the firm or we'll write one more word of the new firm total capital of the new firm what will you do 70,000 into 4/1 70,000 into 4/1 कितना आ गया ₹2,80,000 क्लियर यस और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गई टोटल कैपिटल आई की थी जैस्मिन न्यू फर्म कौन कौन ए बी सी तीनों न्यू फर्म वर्ड लिखने का फायदा था मैं जस्ट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिख रहा सी बट आई चेंज्ड इट बैक टू न्यू फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इंक्लूड्स किनो किनो ए बी एंड सी so if total capital of the new firm is 2,80,000 which includes A's capital which includes B's capital which includes C's capital अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ it should come to zero total capital of the new firm is 2,80,000 out of that A's capital कितनी है 60,000 B's capital 120 C's capital 70 60,000 B दी कितनी 1,20,000 C's capital 70,000 so this should come to be zero but नहीं आ रहा चेक करो 280 से माइनस करो 60 120 एंड 70 कितना आ गया
250 माइनस करके बैलेंस 30,000 इज योर बैलेंस, यस और नो? आया ना बैलेंस? बट नॉर्मली ਕੀ होना चाहिए ਸੀ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म चो तीनों बार कटते तो जीरो आना चाहिए था, तो जीरो नहीं आ रहा, मीन दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ द फॉर्म। ये भी गुडविल भी की है पूरी फर्म की, क्योंकि पूरी फर्म की कैपिटल की गल की ना, सो इचो गुडविल भी की आई बच्चा फर्म की। दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। नाउ आउट ऑफ दिस की रिक्वायर्ड है सी दी, so C's share of goodwill is equal to, it's 30,000 into 1 by 4, this is the way, समझ रहे चीज? नाउ द पॉइंट इज जेड़ा न्यू पार्टनर आया ना, देखो कितनी कैपिटल लेके आया 70,000, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਡਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ 75 is bringing combined 70,000, ठीक है? दैट्स व्हाई मीनिंग याद करना कोई मुश्किल है, जिन्होंने प्रैक्टिकल आता उन्हें मीनिंग समझ आ गया, जिन्होंने मीनिंग पता उन्हें प्रैक्टिकल समझ आना चाहिए, बिकॉज वी हैव रिटन द सेम इंग्लिश। हिडन गुडविल इज दैट गुडविल which is calculated on the basis of new partner's capital contribution and his share of profit, and his share of profit, बोलो, it is that goodwill which is based on new partner's capital contribution and his share of profit, तो ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ कैलकुलेट ਕੀਤਾ। पूरे क्वेश्चन च हर ए और बी दी कैपिटल गिवन, सी दी कैपिटल गिवन है, क्यों कितनी लेके आ रहे हैं, सी दा शेयर गिवन है प्रॉफिट का, गुडविल का कितना नाम है नहीं, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, जबकि क्वेश्चन के डाटा के अंदर कितने गुडविल का पॉइंट ही नहीं है, और क्वेश्चन कह की रहा गुडविल फाइंड करके दो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। कितना फाइंड करना, सब तो पहली चीज दोबारा सुनो हम सारे, इफ वी नो कि सी इज कैपिटल इज 70,000 रुपीज एंड सी द प्रॉफिट शेयर गिवन है 1/4, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ में यूज करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूरे क्वेश्चन किते कोई गल नहीं की अदरवाइज गुडविल दी, वी हैव टू थिंक ऑफ कि अगर ਉਹਦਾ शेयर 1/4 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ कैपिटल 70,000 है, मींस ਉਹਦੀ कैपिटल अगर 70,000 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फिर टोटल कितनी हुई 280। अगर किसी चीज का 1/4 हिस्सा 70,000 है तो टोटल कितना होगा, उन्हें 4/1 कर दो, तो यू विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दैट इज 2,80,000। गॉट इट, यस और नो? 2,80,000। आफ्टर दिस अगर 2,80,000 की टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उन्हें जो तीनों पार्टनर अगर माइनस कर दोगे, न्यू फर्म मींस एबीसी तीनों इंक्लूडेड, अगर तीनों की कैपिटल माइनस करोगे इट शुड कम टू जीरो, बट नहीं आया ना, ਤੁਸੀਂ ए ਦੀ कैपिटल माइनस की, बी ਦੀ ਕੀਤੀ, सी ਦੀ ਕੀਤੀ, कितना आंसर आया 30,000, so that is the hidden goodwill of the firm, okay, yes or no? So hidden goodwill of the firm जो ਤੁਸੀਂ C ਦਾ शेयर फाइंड ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ पोर्शन सॉल्व हो गया, that is क्वेश्चन ने क्या सी फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, गॉट इट? ਹੁਣ क्वेश्चन ने पूछी जर्नल्स, जर्नल पहली की आंदी नॉर्मली साडी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन ने कितने लिखा कि गुडविल लेके आया, नहीं क्वेश्चन ने कैपिटल लिखी है, अगर वो नॉर्मली हिडन गुडविल ਦੇ क्वेश्चन जो कभी भी नहीं कहते, बट पिछले 2-3 साल तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आन लग ਪਿਆ, आई विल शो यू दैट आल्सो, बट फिलहाल ਅਸੀਂ नॉर्मल जो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ तक वो देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर हिडन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, वी हैव डिस्कस कि जिन्नी कैपिटल लेके आया ਉਹਦੇ अंदर ही गुडविल हिडन है, ठीक है? तो व्हाट विल ही डू, फर्स्ट जर्नल एंट्री दसो की आऊगी, तुसी प्रॉपर फॉर्मेट पुट करनी, ओके? तो बोलो फर्स्ट जर्नल की आऊगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आया 70,000, अलग तो गुडविल आया कोई, नो कितने भी नहीं कहना क्वेश्चन में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अमाउंट गिवन इज, बोलो, 70,000। ठीक है। नाउ वंशिका गुडविल कितनी सी होती? 7500। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਡਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਡਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨੋਟ ਬ੍ਰੌਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो सीज कैपिटल चो ही डेबिट कर दो कितना अमाउंट, 7500 टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सो टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आऊंगी ਹੁਣ ਉਹ नहीं पता, सोचो। क्वेश्चन ओल्ड रेशियो है कितने? नो, सो यू विल assume टू बी इक्वल 1:1। फिर क्वेश्चन न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4, मतलब इट इज टाइप 1, और टाइप 1 ओल्ड और एसआर बिल्कुल सेम। तो मीन्स इतने एसआर कितने यूज करोगे इक्वली, सो इट विल बी 3750 एंड 3750 इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1। और नीचे यदि सारी डिटेल दे दोगे कि ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू द शेयर्स 1/4, टाइप 1 लगा के न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग सॉल्व करोगे। ठीक है, आने की स्किप कर देना न्यू रेशियो एसआर, और वो तो पहला ओल्ड रेशियो की एज्यूम करोगे 1:1। ये दूसरी सॉल्व करो। ओके, यस और नो, क्लियर विद द कंसेप्ट? ये कितने और क्वेश्चन देखते हैं। इस तो पहला और देखो, एग्जांपल सुनो। क्वेश्चन इज सेइंग अगेन, अनिल एंड सुनील, ठीक है, अनिल एंड सुनील वर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स, ठीक है, आई विल डिक्टेट यू, जब तुसी लिखोगे पहला समझ लो। दे आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3,20,000 एंड रुपीज 2,40,000। They admitted Charu as a partner. की गिवन होगा बोलो चारू का, फॉर 1/4 शेयर एंड कैपिटल ऑफ रुपीज 3,20,000। दिस इज इट। करना हो गुडविल फाइंड करो एंड बोलो जनरल एंट्री। शॉर्ट समझना तुम, क्योंकि पैटर्न समझ चुके की सीखा। अगर इतने गुडविल और वो फाइंड करना है तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल, एंड हिडन गुडविल इज दैट गुडविल विच इज बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सब तो पहली चीज चारू कैपिटल लिखी था, फॉर्मेट पूरा सेम है, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल एंड ऑल। तो सीज कैपिटल चारूज कैपिटल और ब्रैकेट्स के लिखना शेयर होता 1/4, कितनी कैपिटल बोलो, तो रुपीज 3,20,000। इस तो बाद सानू की मिलूगा कि अगर सर 1/4 शेयर 3,20,000 है तो टोटल कितना, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना फाइंड करोगे, 3,20,000 था 4/1 कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 12,80,000। वेरी गुड, 12,80,000। नाउ दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अगर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, की माइनस करोगे सर तीनों पार्टनर्स कौन है, अनिल सुनील चार। अनिल्स कैपिटल
सुनील्स कैपिटल, चारूस कैपिटल। अनिल दी कैपिटल कितनी गिवन है? 320। सुनील दी 240, चारू दी 320। 240 and next 320 again. Got it? कितना आ गया बैलेंस? 4 लाख रुपीज आ गया ਤੁਹਾਡਾ बैलेंस। This is the hidden goodwill of the, बोलो, firm. If you got hidden goodwill of the firm, so what will be the share of Charu? Charu's share of goodwill कितना सी? शेयर कितना सी? 1/4। तो यदि गुडविल कितनी आ गई? तो 1 लाख आ गई। गॉट इट? तो यदि जर्नल सुन दसो की आओगी? फर्स्ट जर्नल विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू Charu's capital. How much? How much? How much? कैपिटल कितनी बताओ थी? 320। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू Charu's capital 3,20,000। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? 1 lakh। So second entry will be C's capital, Charu's capital debit 1 lakh to Anil's capital and to Sunil's capital in the sacrificing ratio, and sacrifice again 1:1 ही आऊगा। ओल्ड में नहीं गिवन क्योंकि 1:1, एसआर भी 1:1 ही आऊगा। यस और? तो 1 लाख का कितना आ जाएगा? 50,000 एंड एनी डाउट? समझ? फिक्स कैपिटल का कोई ऐसे रोल, बोलो। सेकंड एंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन विल गो टू करंट अकाउंट। ये सेकंड एंट्री की बनी पे चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट और सुनील करंट अकाउंट। हाँ नहीं कि कंसेप्ट गायब हो जाएगी, कंसेप्ट ने उदा ही चल। गॉट इट? दूजी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉ, ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਆਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪ੍ਰॉपर सॉल्व करना, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए।